In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you're doing well. Students, today we learn math subject unit number 1 whole numbers. Before starting our lesson, we discuss our SLOs. Read Roman numbers up to 20. Write Roman numbers up to 20. Recognize even and odd numbers up to 99 within a given sequence. Differentiate between even and odd number within a given sequence. Identify the place value of digits in numbers up to 5 digits. Read and write given numbers up to 10,000 in numerals and words. Students, do you know about that? What is Roman numbers? Roman numbers are used in usual way of writing numbers throughout Europe and late Middle Age. It is a combination of Latin alphabets. ये लातीनी alphabets हैं and each letter with a fixed integer value और हर एक नंबर की fixed value है. You can see a chart like this in your book. 1 is equal I, 2 is equal double I, 3 is equal triple I, 4 is equal 1 I or V, and 5 is equal V. You can read these numbers and Roman numbers. I can read the numbers written in the chart 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? These are numbers and this is Roman counting. These numbers given on the clock are called Roman numbers. These numbers are called Roman numbers. Roman numbers can be read the Roman numbers. Student, V is called 5, VII is called 7, IX is called 9, X is called 10. These counting are Roman counting. Count the sharpeners and write in Roman numbers. Count and write. That is 9 sharpeners. That is numbers and that is Roman numbers. Roman numbers up to 20. 1 is equal I, 2 is equal double I, 3 is equal triple I, 4 is equal IV, 5 is equal V, 6 is equal 5 plus 1 is equal 6, V plus 1 is equal VI. You can read these numbers. Write the time by looking at the clocks. That is 3 o'clock and that is 6 o'clock. Write the missing Roman numbers in the blank boxes. You can write Roman numbers in the blank boxes. 1, 2, 3, 4, 5. Like this in your book. Students, exercise number 1, write the Roman numbers. यहाँ हमारे पास numbers हैं, हमने उनके Roman numbers write करने हैं. 2 is equal double I, 5 is equal V, 12 is equal X double I, 16 is equal X VI. You can solve these activity by on yourself. Count the chocolates and write in Roman numbers. You can count these chocolates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the chocolates are 10. You can write 10 in this box. Okay? You can solve these activity like this in your book. Students, do you know about that? What is even and odd numbers? To understand even and odd numbers, count the sharpeners in pair of 2. What is the even numbers and odd numbers? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ शॉर्पनर्स के पेयर बने हैं और कुछ अकेले हैं. ओके, चले देखते हैं इवन नंबर्स किन नंबर्स को बोलते हैं.
The number which are completely divisible by 2 are called even number. जो completely divide हो जाए 2 पर उनको even numbers बोलते हैं. Like 2, 4, 6, 8, 10. ये 2 पे completely divide हो जाते हैं तो ये even numbers हैं. The numbers which are not completely divisible by 2 are called odd numbers. जो 2 के टेबल में इक्वली डिवाइड नहीं होते उनको odd numbers बोलते हैं. Like 1, 3, 5, 7, 9. That is odd numbers. Okay students? Count the following object and write even, odd in the given box. Oranges are 4 and 4 is an even number. Apple is 1, 2, 3, 3. So 3 2 के टेबल में नहीं आता, 2 पे डिवाइड भी नहीं इक्वली होता तो ये odd नंबर है. इसी तरह आपने बाकी एक्टिविटी भी फिल करनी है स्टूडेंट्स. राइट इवन और odd इन फ्रंट ऑफ द गिवन नंबर्स. यहाँ हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हमने इनके आगे लिखना है इवन और odd. 2 इज़ एन इवन नंबर. 15 2 के टेबल में इक्वली डिवाइड नहीं होता तो डैट इज़ odd नंबर. 9 इज़ एन odd नंबर. 23 इज़ एन odd नंबर. ओके. सेपरेट द फॉलोइंग इवन एंड odd नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स. 8, 12, 25, 31, 40, 54, 67. यहाँ हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हमने इवन और odd को सेपरेटली डिवाइड करना है. ओके स्टूडेंट, ये आप खुद सॉल्व करेंगे एक्टिविटी जैसे कि टीचर ने की हुई है. 8 इज़ एन इवन नंबर. 12 इज़ एन इवन नंबर. 40 इज़ एन इवन नंबर. 25, 31 इज़ एन odd नंबर. Exercise number 2. Write the numbers of the following objects and identify whether they are even or odd numbers. Okay. 3 is an odd number. That is 11 sharpeners and 11 is an odd number. You can solve this activity by on yourself. Identify even and odd from the given numbers and write them separately. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हमने इवन और odd नंबर्स को अलग अलग करके लिखना है, सेपरेटली राइट करनी है. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द odd नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स. वी कैन राइट odd नंबर बिटवीन द गिवन नंबर्स. बिटवीन होता है दरमियान में. 4 and 16 और 4 के दरमियान जितने भी odd नंबर्स हैं वो हम राइट करेंगे. लाइक 4 के बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15. Question number 4. Write the even number between the given numbers. 1 and 10. 1 और 10 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हम राइट करेंगे. लाइक 2, 4, 6, 8. You can solve these questions by on yourself. Separate the even and odd numbers from the given numbers. You can write separately even and odd numbers in this line. Place value of digits in numbers up to 5 digits. The teacher called 4 students and gave them hats on which ones, tens, hundreds and thousands written and also gave them cards. Find the value of each digit. Students, टीचर 4 स्टूडेंट्स को बुलाती हैं और उनको हैट्स देती हैं जिन पे वैल्यू लिखी होती है 1s, 10s, 100, 1000 की, और उनको कार्ड्स भी दिए जाते हैं लाइक 3, 1, 3, 8. We find the place value of each digit. 8 is at thousands place, so the value of 8 is 8000. 3 is at hundreds place, so the value of 3 is 300. 1 is at tens place, so the value of 1 is 10. 3 is at ones place, so the value of 3 is ones. 8000 plus 300 plus 10 plus 3 is equal 8313.
1 tens is equal 10 ones, 1 hundreds is equal 10 tens, 1000 is equal 10 hundreds. The number which is greater than 3 digits, जब 3 digit से बड़ा नंबर होता है, we leave space आफ्टर एवरी 3 डिजिट. हम 3 डिजिट के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नंबर्स की राइट साइड पे, जैसे कि यहाँ पे स्पेस दी गई है. स्टूडेंट्स, जैसे टीचर ने हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स, आपने भी हाईलाइट करने हैं. विच इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर? स्टूडेंट, डू यू नो अबाउट दैट? द 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. Greatest 3 digit number is 999. By adding one more to 999, we get 1000. Okay, students? The greatest 4 digit number is 9999. By adding one more to 9999, we get 10,000. It is the first 5 digit number. Student, that is a place value chart. When we find any value of the number, we can use this chart. Okay? Like 4 at a ones place, 7 at tens place, 8 at hundreds place, 9 at thousand place, 5 at 10,000 place. Okay? Value of 5 is equal 50,000. Value of 8 is equal 800. Now student, open your page number 14, exercise number 3. Write the following numbers in words. We can write numbers in words. 5342. Okay, firstly we write ones, tens, 100,000 at that numbers. Okay. Secondly, we write in numbers. Second, 7123. You can solve these activities by on yourself. Write the following numbers in numerals. 5840. पहले हमने नंबर्स को वर्ड्स में राइट किया था, अब हम वर्ड्स को न्यूमरल्स में राइट करेंगे. ओके, 5840. आप जिस तरह टीचर ने कॉलम मेक किया है, आप भी इसी तरह कॉलम मेक कर लीजिएगा, आपको सॉल्विंग में बहुत आसानी होगी. स्टूडेंट्स, 6363, 32,308. फिल इन दी ब्लैंक्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस हैं, हमने इनके वैल्यू राइट करनी है इन बॉक्सेस में. 2347, 2 at थाउजेंड प्लेस, 3 at hundreds place, 4 at tens place and 7 at ones place. Okay, you can solve this activity by on yourself. Match the correct number. 7800. 7800. You can match the number with correct column. Okay. 82,651. Okay, you can match these number in your book. Write the value of 4 and 6. So 4 at thousand place and 6 at tens place. 4 multiplied 1000 is equal 4000. 6 multiplied 10 is equal 60. So the value of 4 is 4000 and value of 6 is 60. Write the place value of each digit of the numbers given below. स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं, हमने उनकी प्लेस वैल्यू मालूम करनी है. जब भी हमने किसी नंबर डिजिट की प्लेस वैल्यू मालूम करनी है, फर्स्टली वी राइट वंस, टेंस, 100,000 एट दोज नंबर. राइट ऑन दोज नंबर्स. 2 at thousand place, 3 at 100 place, 5 at tens place and 7 at ones place. We can write like this in the boxes. 2357, 67,815. Write the value of encircled digit. स्टूडेंट, हमने सर्कल डिजिट की वैल्यू मालूम करनी है.
तो जब भी हमने वैल्यू मालूम करनी है हम उनके ऊपर सबसे पहले राइट करते हैं वंस, टेंस, 100,000 ताकि हमें पता चले कि उस डिजिट की वैल्यू क्या है। तो सर्कल है 6, सो द वैल्यू ऑफ 6 इज़ 60 एंड सेकेंड क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 3 इज़ 300, द वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5000, द वैल्यू ऑफ 1 इज़ ones। राइट द वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स। स्टूडेंट्स आपने तमाम डिजिट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ 7 इज़ 70,000, द वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3000, द वैल्यू ऑफ 8 इज़ 800, द वैल्यू ऑफ 5 इज़ 50, द वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2। You can solve this activity by on yourself. Find the given numbers in crossword puzzle. It may be horizontal or vertical. The first one is done for you. That is a puzzle box. You can find words vertically or horizontally. You can read these lines and solve the puzzle box. 7,343. Second is 37,729. Third is 6,371. After the read statements, you can solve puzzle box like this. So students, after solving all activities, we will able to read Roman numbers up to 20, write Roman numbers up to 20, recognize even and odd numbers up to 99 within a given sequence, differentiate between even and odd numbers within a given sequence, identify the place value of digits in numbers up to 5 digits, read and write the given numbers up to 10,000 in numerals and words. Students, you can solve all activities in your book and practice on your rough copy. Allah Hafiz.